People think in India, firstly, it's very difficult to make people understand in India what's ACCA. आधे लोग यही कहते हैं कि UK वाली CA, but it's basically all about, we get to know all about the finance, all about the what we do in foreign. I have a family business, but I wanted to do something out of the box from the family. Daily, for a basic degree, I'm doing BBA, but the main goal is ACCA for me as of now. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फिनट्रैम ACCA सक्सेस स्टोरीज। आज हमारे साथ हैं रणवीर, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बीटी का एग्जाम निकाला है। आइए जानते हैं उनसे उनकी अब तक की जर्नी के बारे में। तो हाय रणवीर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम, आई एम वेरी गुड एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरा पेपर आज फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया बीटी का। सो ऑल थैंक्स टू यू एंड योर फैकल्टी। ओके, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हो? एग्जाम से पहले आपकी क्या फीलिंग थी? फर्स्ट बेसिकली एग्जाम से पहले तो बड़ा स्ट्रेस्ड एंड बड़ा ऐसे लग रहा था कि एंजाइटी हो रही थी कि पेपर हो अच्छा जाएगा, पास होएगा, क्लियर नहीं होगा, बिकॉज एक फर्स्ट ACCA का एग्ज़ाम है। इट वाज नॉट अबाउट द कि तैयारी कैसे है, इट वाज अबाउट कि ACCA का एग्ज़ाम है, तो एक कोर्स का एग्ज़ाम है, तो कैसा होता होगा। तो वो एक चीज़ हो गई एंड आफ्टर गिविंग इट फील्स वेरी रिलीव्ड, ओवरवेलमिंग, अच्छा लग रहा है कि एग्ज़ाम अच्छा गया। दैट्स नाइस टू हियर। तो अभी आपने किसी को इन्फॉर्म किया अपने घर में कि आपने क्रैक कर लिया है फर्स्ट एग्जाम? Yeah, I have informed my mother and my friend. I have informed both of them and they were absolutely very happy about it. Okay, that's nice to hear. Okay, so what comes to ACCA? आपको किसने बताया regarding this whole curriculum? So ACCA was told to my mother by his some colleague in office. So basically he told about it that his child also is doing it, who is senior maybe 2 or 3 years more than me. He is also doing ACCA and he's planning to go to Dubai something and all. Okay. And he told me that it is very good for finance, it is good for very in understanding and very very good courses which can give me further benefits in life. So that's how I got to know about it. ओके, सो जैसे कि अगर जो व्यूअर्स जो अभी तक नहीं जानते हैं व्हाट इज़ ACCA, तो आपकी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप क्या बताना चाहोगे कि क्या है ACCA? ACCA, people think in India, firstly, it's very difficult to make people understand in India what's ACCA. आधे लोग यही कहते हैं कि UK वाली CA, but it's basically all about कि everything it consists of. It consists of financial accounting, business and technology, and further we got to know about law. And so in total we get to know all about the finance, all about the what we do in foreign. And in total it is a very good course to do, which I prefer and also suggest to the audience that they can also pursue. ओके, तो रणवीर आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो ACCA की? Firstly, it's the Finterm faculty, the teacher who gives us guidance and all, and who makes us learn everything about the specified course we are studying. And after it, she gives us mocks and study hub is also provided by the ACCA. Daily, I have done the worksheets provided by ma'am, and really took personal suggestions and guidance from the ma'am also. तो रणवीर, आप along with ACCA what are you doing? Along with ACCA, really I have a family business, but I wanted to do something out of the box from the family. Daily, for a basic degree, I'm doing BBA, but the main goal is ACCA for me as of now. ओके, तो रणवीर बीटी के एग्जाम में आपको टफेस्ट टॉपिक कौन सा लगा? Toughest topic was the session 12 role of accounting, which seemed to be very toughest for me. Daily, the Finterm faculty gave me guidance and solved all my personal doubts which I had. ओके, सो रणवीर, व्हाट आफ्टर ACCA? क्या प्लान्स हैं? After ACCA, I'm planning whatever the placements I'll get and whatever the further I can do. As of now, I'm not thinking yet, but it is for now that what the countries and what the best benefit I will get from any country, I will pursue it, go for it. And therefore, after it, मैं BBA के साथ एक course and हो ही गया. So MBA is the another plan for it. Really, family businesses also. What can I do? ओके, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं निकल पाता है, उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे? You should be calm and be patient, not put in a hurry कि एग्ज़ाम देना जल्दी देना है। मैंने भी काफ़ी टाइम लिया। I could have given exam very before, but due to my family something, I stopped and waited for the right time to give the exam. Daily I cracked the exam in first go. ओके, एंड जैसे कि आपने बताया कि आप फिनट्रैम ग्लोबल से अपना जो प्रेपरेशन है कर रहे हैं, तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका फिनट्रैम के साथ में?
It was a very overwhelming experience. Fintram offered me very informative and educational stuff from which I used to study, and they cleared all my doubts, and there was nothing any negative point I could point upon them. ओके कोई 3 टिप्स जो आप देना चाहोगे उन बच्चों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं ACCA के लिए? 3 tips are you should be firstly remain be patient and study all the important theories and topics given in the chapter if numericals and practice numericals, and the third study hard and give the exam as soon as possible. ओके सो रणवीर, वन वर्ड फॉर FinTram. It would be reliable because it always didn't give me a thing कि मेरे को एग्ज़ाम किससे पढूं किससे पूछूं. मेरे को हमेशा every time they supported me and they were very reliable for me. ओके रणवीर, थैंक यू सो मच अपने इंसाइट्स, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. Thank you so much, ma'am. सो हमने आज देखा रणवीर की अब तक की स्टोरी के बारे में. इस तरह की और इंसाइटफुल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें FinTram ग्लोबल को, बिकॉज Think ACCA, think FinTram.